यहाँ आपको बताएं, इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात में कोई डील नहीं हो सकी। अमेरिका के नायब सदर जेडी वैंस ईरान से डील न होने का ऐलान करके इस्लामाबाद से रवाना हो गए हैं। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात में कोई डील नहीं हो सकी है। अमेरिका के नायब सदर जेडी वैंस ईरान से डील न होने का ऐलान करके इस्लामाबाद से वापस रवाना हो गए। ये मनाजिर एयरपोर्ट के मनाजिर थे जब अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस को अलविदा करने के लिए नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और अमरीकी सफ़ीर नैटली बेकर भी वहाँ पर मौजूद थीं। वहाँ पर वफ़द ने उनको खुदा हाफिज़ कहा और उसके बाद ये अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस वापस अमरीका रवाना हो गए हैं। इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात में कोई डील नहीं हो सकी है। ईरान ने हमारी शराइत कबूल करने से इनकार कर दिया। नायब अमरीकी सदर जेडी वैंस ने यह कहा था कि अमरीका के नायब सदर जेडी वैंस ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल से भी इज़हार तशक्कुर किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल ने हैरत अंगेज़ काम किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल ने अमरीका ईरान इख्तलाफात दूर करने और डील करने की कोशिश की। 21 घंटे तक मुज़ाकरात हुए। अच्छी खबर यह है कि ईरानियों से कई ठोस उमूर पर गुफ्तगू हुई। बुरी खबर यह है कि ईरानियों से मुआहदा नहीं हुआ और हम वापस जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने अपनी डेडलाइंस और जिन चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं वो बता दी हैं। हमने ईरानियों को वो चीज़ें भी बताईं जो हम एडजस्ट नहीं कर सकते। मैं अवामी सतह पर मुज़ाकरात नहीं करना चाहता। जेडी वैंस का तफसीलात में जाने से गुरेज। हम ये आज़म चाहते हैं कि ईरान मुस्तकबिल में न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा। हमने ऐसा आज़म नहीं देखा कि ईरान मुस्तकबिल में न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा। जेडी वैंस ने ईरान के मुंजमद असासों से मुतालिक उमूर समेत तमाम उमूर पर बात की। जेडी वैंस ने लचकदारी का मुजाहिदा किया मगर डील नहीं हो सकी। जेडी वैंस सदर ट्रंप ने उन्होंने कहा कि अच्छी नीयत से जाएं, डील की हर मुमकिन कोशिश करें। बदकिस्मती से ईरान मुज़ाकरात में डील के लिए पेशरफ ना हो सकी और मुसलसल सदर ट्रंप से राबते में थे। जेडी वैंस की जानिब से ये कहा गया कि कम से कम 6 बार या 12 मरतबा तो उनसे बात की और इसके अलावा दीगर रहनुमाओं से भी बातचीत हुई। हमने एडमिरल कूपर, वज़ीर जंग पीट हेक्सेथ और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से भी बात की। हमने कौमी सलामती टीम, वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट से भी गुफ्तगू की। हम यहाँ से जा रहे हैं बहुत सादा तजवीज़ और हम आहंगी के तरीक़ाकार के साथ जो कि हतमी है। Let me say a couple of notes of appreciation. First of all, to the Prime Minister of Pakistan and to Field Marshal Munir, who were both incredible hosts. And whatever shortcomings in the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. We have been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. I won't go into all the details because I don't want to negotiate in public after we've negotiated for 21 hours in private. But the simple fact is that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon, and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. That is the core goal of the President of the United States, and that's what we've tried to achieve through these negotiations. Again, their nuclear program, such as it is, the enrichment facilities that they had before, they've been destroyed. But the simple question is, do we see a fundamental commitment of will for the Iranians not to develop a nuclear weapon, not just now, not just 2 years from now, but for the long term? We haven't seen that yet. We hope that we will. We talked about all those issues, Jen, and we talked about a number of issues beyond that. And so certainly those things came up. But again, we just could not get to a situation where the Iranians were willing to accept our terms. I think that we were quite flexible, we were quite accommodating. The President told us, you need to come here in good faith and make your best effort to get a deal. We did that. And unfortunately, we weren't able to make any headway. Talking to the President consistently, I don't know how many times we talked to him, a half dozen times, a dozen times over the past 21 hours. We obviously also talked to Admiral Cooper, to Pete, to Marco, to the entire national security team. We talked to Scott Besson a number of times. So look, we were constantly in communication with the team because we were negotiating in good faith. And we leave here with a very simple proposal, a method of understanding that is our final and best offer. We'll see if the Iranians accept it. Thank you.